Good evening, Ria. Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, good evening, sir. Okay. So today I'm going to open October 2022 current affairs. I'm going to discuss this. Let's wait a minute or two. These are some 18 topics from politics through miscellaneous. Few of the topics we will be discussing today, and rest of the topics we will be discussing tomorrow. Good evening, Khanak. Good evening, sir. खनक बहुत दिनों बाद क्लास में आई हो? यस सर, वो थोड़ा ऐसे ही चल रहा था कॉलेज के और इसलिए. गुड इवनिंग अरुणिमा. गुड इवनिंग. Good evening, sir. Good evening, Akash. So when I write here politics, it is basically polity and governance. What has happened in that domain, I'm going to discuss in against the month of October. So in polity and governance, Ladakh MP Jamyang Tir Singh Namyal launched मैं भी सुभाष campaign from Leh. So basically it's a series of events which is organized by Netaji Subhash Chandra Bose INA Trust in collaboration with Ministry of Culture. The मैं भी सुभाष campaign is going to be organized on the occasion of 125th birth anniversary of Netaji on 23rd January next year. That campaign has been launched. So next development, and the government of India will launch a month-long nationwide Clean India 2.0 program. Department of Youth Affairs of the Ministry of Youth Affairs and Sports will launch a month-long nationwide Clean India 2.0 from 1st to 31st October 2022. After the successful campaign of last year. The program is being organized all the villages across the country through network of Nehru Yuva Kendra Sangathan, affiliated youth clubs and National Service Scheme NSS affiliated institutions. Thereafter, country's first migrant monitoring system launched the month of October for information on migrant women. This news is comparatively more potent to be the part of discussion or part of understanding. India's first migration monitoring system was launched by Maharashtra Women and Child Development Minister in Mumbai. The website-based monitoring migration tracking system will track the movement of vulnerable seasonal migrant beneficiaries. The migration monitoring system aims to provide information about migrant pregnant women, lactating women, and children. System provides updated information about migrant pregnant women. Sorry, this particular is the repetition.
We move next piece of information. So Maharashtra Women and Child Welfare Minister launched this monitoring system. The State Department has created website. So information about the seasonal, and there will be single platform. So it will be available on a single platform. All the information related to women and child welfare, especially related to migrant women and children, will be available on single platform. Next development happened in the month of October, which I felt can be kept in the list of development. The Union Transport Minister, Road Transport and Highway Minister announced the mandatory 6 airbag rule for passenger cars will come into force in October 2023, and this safety measure has been announced on 1st October 2022. Road Transport Ministry had earlier planned to make 6 airbags mandatory in 8-seater vehicles. Now it has been made mandatory to almost all section of passenger vehicle. Government had to defer the implementation for the proposal to make 6 airbag mandatory cars by year due to the global supply chain constraint. So that is why it is being shifted to 2023. What happened? Another development that is related to Kerala. Honesty shops in school campuses help inculcate virtues among children. Honesty shops, this is a little unusual piece of information. That is why I have kept it in this list of development. It may not be necessary from the point of view of written examination, but for the sake of you can say कि थोड़ा curiosity के point of view से आप इसे देख सकते हैं. Honesty shop have been opened in 15 schools in Ernakulam district of Kerala. Honesty shops are a part of the Student Police Cadet SPC project, which aims to provide valuable lesson on truth and the integrity for the students. In these honesty shops, there is no salesman at the counters. The students can drop the money for each item in the collection box kept in the shop. I don't know how it is going to help, but somehow it will inculcate some of the virtues that may happen. This may be an experiment to sensitize. Honesty shop have been launched under the Student Police Cadet. An SPC project was conceived to inculcate better civic sense among students and mold them as a responsible youth. The objective of honesty shops is to provide students a chance to experience the virtue of honesty. The schools have switched off the CCTV facilities towards the shop to instill confidence among the students. So this is a very good experiment, and such type of experiment should be the part of practice. ऐसा होते रहना चाहिए, कहीं कहीं पर करके देखते रहना चाहिए. The Prime Minister inaugurated All India Institute of Medical Science at Bilaspur with a promise to increase access to affordable healthcare in Himachal Pradesh in an eco-friendly manner, and this aims is known will also run in an eco-friendly manner and will also known as a green hospital. Thereafter, another development, CK Misra Committee has submitted. So keep yourself, please. मतलब अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने देना. ये इसी तरह से
और ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ाने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा. दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट इज फार मोर रिलेवेंट एंड रिक्वायर्ड, एंड दैट टू इन a very concise manner. So CK Misra committee has submitted a report on sustainable finance suggesting the development of carbon market. Hope you all must have listened about the carbon credit. Carbon credit सुना है? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के केस में कार्बन क्रेडिट अलॉट किए जाते हैं इंडस्ट्रीज को, और जो भी किसी तरह की ऐसे वेंचर और एंटरप्राइजेज में एंटरप्राइजेज को करते हैं, तो दैट इज बेसिकली दे आर गिवन कार्बन क्रेडिट. इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ मेजर टेकन अगेंस्ट इंसेंटिवाइजिंग प्रोसेस. Expert committee headed by former Environment and Forest Secretary CK Misra has submitted a report on sustainable finance suggesting the development of carbon market. Among other things, the International Financial Services Centers Authority. Thereafter, the committee also proposed setting up a dedicated MSME platform for sustainable lending. ऐसे यूनिट्स जिनकी कार्बन क्रेडिट हाई है और जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, they will be incentivized in several other forms. Thereafter comes panel to study SC status for Dalit post conversion. तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए. यूनियन गवर्नमेंट has now formed a commission of inquiry to examine the issue of whether scheduled caste status can be accorded to Dalits who have been over the years converted to religions other than Sikhism and Buddhism. को बताते हैं लेटेस्ट जो है सिखिज्म को ऐड किया गया. सिखिज्म से जुड़े हुए जो भी फॉलोअर्स थे, अगर वो अगर हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के ऐसे फॉलोअर्स जो कन्वर्ट होते हैं सिखिज्म में, तो उनको भी हिंदुइज्म के, तो उनको एससी का स्टेटस दिया जा सकता है और दिया गया. लेकिन अभी बहुत सारे कुछ ऐसे केस मामले आए हैं जिनमें कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हुआ है, तो क्या उनको एससी का स्टेटस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर एक पैनल जो है वो बनाया गया है. So 3-member commission is headed by former Chief Justice of India KG Balakrishnan. Currently Constitution Scheduled Caste Order 1950 stipulates that no person professing a religion different from Hinduism, Buddhism and Sikhism can be deemed to be a member of scheduled caste. अब हर रिलीजन की अपनी कास्ट प्रैक्टिसेस हैं. उन कास्ट प्रैक्टिसेस में से इन 3 रिलीजन के लोग अगर कन्वर्ट होते हैं दूसरे रिलीजन में, तो क्या उनका शेड्यूल का स्टेटस इंटैक्ट रहना चाहिए, तो इसके ऊपर एक पैनल बनाया गया है. Thereafter, India's first cable cum suspension bridge has been approved on Krishna River. India's first cable cum suspension bridge across Krishna River approved by Centre. The bridge will connect Telangana and Andhra Pradesh and pass through the Nalamala forest range. We need not to discuss about the cost and all, but this is the piece of information कि कृष्णा नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगा और नालामाला फॉरेस्ट से होकर के गुजरेगा. नाउ कम्स द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. क्या हुआ है? इंडिया गेट, द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ KRBL. आप सब लोगों ने ये जो ब्रांड है यूज भी किया होगा. हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स नंबर 1. India Gate, the flagship brand of KRBL, has been recognized as world's number 1 बासमती राइस. एक चीज और भी हम आपको बताते हैं, GI एक कंसेप्ट होता है that is known as geographical indicators. सुना है पहले कभी?
जीआई टैग? हाँ, कोई मुझे बताएगा आपने से? यस सर। हाँ, क्या होता है जीआई टैग? सर किसी एक पर्टिकुलर लैंडमार्क वो अपना वो बोलता है लाइक दिस इज माय ओरिजिन, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता हाँ है जी सर, ज्योग्राफिकल कोई इंडिकेशन। भी ऐसा प्रोड्यूस जो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर ही प्रोड्यूस होता है और वहां से उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, और उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में उस प्रोड्यूस के पैदा होने से उसकी जेन्युइन और लेजिटिमेसी को लिंक करते हैं। दैट लेजिटिमेसी शुड नॉट बी मेड, शुड नॉट बी काउंटरफिटेड, उसकी कॉपी ना हो पाए। उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में पाए जाने वाले उस प्रोड्यूस का फायदा उस ज्योग्राफी में जो लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है उनको जाए। इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग एक तरह का पेटेंट है, इट्स ए काइंड ऑफ पेटेंट। क्लियर? समझ में आया? तो ये मीनवाइल मैंने आपको डिस्कस किया है। जैसे अगर हम अभी, मैंने आपको शायद बताया होगा, बिहार में मखाना बहुत पैदा होता है, तो वहां पर मिथिला एक प्रदेश है, आप सब लोगों ने सुना होगा मिथिला। मिथिला प्रदेश बोलते हैं जहां पर माँ सीता जो है वो उनका जन्मस्थल भी बोला जाता है। तो वहां पर मखाना बहुत पैदा होता है, तो वहां के मखाने को अभी जीआई टैग दिया गया है, उसको बोला गया है मिथिला मखाना। समझिए? क्लियर? सो अभी इंडिया गेट को जो है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड बनाया गया है, बोला गया है मार्केट स्टडी में जो कंडक्ट की थी ग्लोबल रिसर्च कंपनी है, लीडिंग ग्लोबल रिसर्च कंपनी। द क्वांटिटेटिव स्टडी बाय अमेरिका, across continent like Americas, Europe, Asia, and the agency which had done this, that is the quantitative study by Mordor Intelligence, covers the research of white and brown rice, basmati rice categories across continents. So Americas, Europe, Asia Pacific, and Middle East and Africa. These are the samples. These areas can be considered as the subject areas to conduct the research on rice. The research has been done through methodologies like primary and secondary research and data triangulation and insight generation. So Modern Intelligence is a leading global research company. ये बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारी रिसर्च कंपनी है, लेकिन इंडिया की एक और भी मैं आपको मार्केट रिसर्च कंपनी का नाम बता देता हूँ, लीडिंग जो है दैट इज IMRB। या जो जेट या IAFT का एग्जाम देंगे वो इसको जरूर याद रखें, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। ठीक है? सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 1998, इंडिया गेट बासमती राइस हैज बीन वर्किंग कंटिन्यूअसली टू डिलीवर its purpose of enriching lives through basmati rice, a nutritional wonder of nature. So basmati rice को आप nutritional wonder of nature के फॉर्म में भी देख सकते हैं। Over the year, India Gate has developed a successful global consumer franchisee, as evident by the fact that it is exported to over 90 countries and sells 8+ crore packs annually. Next, the grains of India Gate Basmati rice is aged to perfection. Aged का मतलब आप समझते होंगे, कुछ टाइम के लिए उसको रखा जाता है, और एज्ड जो राइस होती है उसकी अपनी एक अलग मार्केट और उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, मेकिंग देम लॉन्गर, फ्लफियर एंड नॉन स्टिकी एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल एरोमा, फुल ऑफ नॉट ब्यूटीफुल, delectable aroma, setting them apart from other rices.
Thereafter comes India stands third in the world in terms of fish production. So Minister of State for Fisheries and Animal Husbandry and Dairy recently said that India stands third in the world of fish production. It is the third largest fish producing and largest aquaculture nation in the world after China. Ministry said third in the world in terms of fish production, making a specific reference to Karnataka. Union Minister said 734.77 crore rupees was allocated to the state under flagship scheme under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana from 2020 to 2021 till date for the development of infrastructure facilities. The vision is to bring blue revolution through sustainable and responsible development of fishery sector. तो आपको क्या याद रखना है? Blue revolution. किससे लिंक है? किससे लिंक है? एक्वाकल्चर से एंड फिशरीज से. ठीक है, याद रख, मतलब जब रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा. द मेन मोटो ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज टू रिफॉर्म, perform and transform of fisheries sector. Thereafter next, Nitin Gadkari launched India's first flex fuel car, Toyota Corolla Altis. इसके लिए आप pib.nic.in और pibindia.com जब आप इस पर जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो ये कार है टोयोटा कोरोला एल्टिस, इससे रिलेटेड जो ये लॉन्च हुई है कार, एक बैकग्राउंड में आपको इसका पूरा वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें फ्लेक्स फ्यूल कार का मतलब आपको समझ में आएगा. वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ. फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है. इसको जो बनाया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने इसको लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में. अब मैं आपको बता देता हूं कि एक कार के पीछे एक बैटरी होगी, बीच में एक मोटर होगी, इस साइड में मोटर को चलाने के लिए आप ये सही कि मोटर को सप्लाई बैटरी से मिलेगी और मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर एक एक आप कहिए डीजल इंजन हो सकता है, आपका सीएनजी बेस्ड इंजन हो सकता है. वो इंजन यहाँ पर कपल्ड रहेगा इसके साथ. तो जो कार है वो कभी हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल पर चले और कभी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक पर चले. दैट इज बेसिकली फ्लेक्सी फ्यूल. तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और इसके बीच में इन दोनों इस टेक्नोलॉजी को क्लब करने के लिए जो भी सेंसर्स या जो भी प्रोग्राम है वो बनाया गया है. तो दैट हैज बीन लॉन्च्ड एंड it is being mandatory over a period of time. The government is planning to do that. क्योंकि हर जगह पर ऐसा हो सकता है कि चार्जिंग स्टेशन ना बनाए जा सके. तो ऐसे केस में ऐसे व्हीकल्स में एक जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका अरेंजमेंट रहना भी जरूरी है. इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट हेलमेट टेस्टिंग सेंटर पहली बार मेरठ में आया है. फर्स्ट स्पोर्ट्स सेंटर हैज कम अप इन मेरठ. India's first sports helmet testing center will be established in Meerut in next 4 months and will be the investment. That MSME's Regional Technological Development Center in Meerut has been accepted by the Ministry of Small and Medium Enterprises. India will get its first sport helmet testing facility under the hub and spoke model. हब एंड स्पोक मॉडल मैं आपको बहुत छोटे फॉर्म में बता देता हूँ. साइकिल का पहिया होता है, उस पहिए में बीच में एक्सल होता है, ये एक्सल है और इस तरह से आपने देखा होगा कि उसमें
स्पोक्स लगी हुई होती हैं जिनको हम तान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हब एंड स्पोक मॉडल है। अगर यहाँ से कोई डेवलपमेंट होता है तो वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता है और यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता है। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज नोन एज हब एंड स्पोक मॉडल। Thereafter, Google launched Play Points in India. Google is set to launch Play Points, a global reward program for users in India. User will earn points when they purchase Google with the Google Play, including in-app items, apps, games, and subscriptions. The reward program has 4 levels known as Platinum, Gold, Silver, and Bronze. The level will provide members with perks and prizes. तो मतलब आप जब Google Play Store से कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन अगर आप लॉन्च करते हो, तो उसके अगेंस्ट आपको गूगल प्ले पॉइंट्स मिलेंगे, और वो एक तरह का आपका रिवॉर्ड सिस्टम है जिसको आप इन ऐप आइटम्स परचेज करने के टाइम पर रिडीम भी कर सकते हैं। ठीक है, more than 2.5 billion people over 190 countries use Google Play every month to discover app, games, and digital content. This is the data. Center has decided to bring in amendment to policy guidelines in the private FM radio space. This particular piece of news is basically helpful in enhancing the reach of the radio among the people. Center has decided to bring amendment to policy guidelines in private FM radio space. It believes these amendment will bring the ease of doing business in the FM radio sector. According to the amendment, Center has decided to remove 3-year window period for restructuring of FM radio permission within the same management group during the license period of 15 years. Now, there is one piece of news only which I found relevant in the field of banking and finance. A rating agency ICRA has maintained the forecast of 7.2% growth of India's gross domestic product for financial year 2023. According to ICRA, growth will be aided by revival of contact-intensive services owing to pent-up demand and back-ended pickup of in government and private capex, means capital expenditure. Now, art and culture. 5th edition of Mega Kayak Festival begin in Rai Bhui. Meghalaya is all set to host a 4-day-long Mega Global Adventure Sports Spectacle, Mega Kayak Festival 2022, starting October 13 at a picturesque Amtiv River in Umtang Place. ये आप देखेगा आर्ट एंड कल्चर में कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। बस इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है। मेगा कायक फेस्टिवल इज रिसीविंग an overwhelming response with the participation assured from leading adventure water sports nations like New Zealand, United Kingdom, Germany, France, and Canada. Now see that science and technology related development. First green tech based incubation center in India to came up in NIT Srinagar. NIT Srinagar में पहला ग्रीन टेक बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, कुछ आइडिया? इंक्यूबेशन सेंटर मींस सर जहाँ पे प्रमोट किया जाता है वो, मतलब किसी भी आइडिया को। इंक्यूबेशन वर्ड itself is indicating where the ideas or the concepts are developed, tested, and later made fit for market. Clear? So TBI
फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आइडिया जनरेटर्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा, स्पेशली डेवलपिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट, बेसिकली व्हाई आई kept it, NIT Srinagar carries the first green tech based incubation center. Now schemes and policies. Prime Minister Narendra Modi launched new scheme प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, बस इतना याद रखिए। अंडर द स्कीम कंपनीज मस्ट मार्केट ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर अंडर सिंगल ब्रांड भारत। भारत के नाम से सारे सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर कंपनीज जो है वो मार्केट में पहुंचाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द सिंगल ब्रांड भारत अंडर द स्कीम ड्यूरिंग किसान सम्मान सम्मेलन 2020। All PM also inaugurated 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र at this particular event also. Thereafter comes Education Ministry launches PM Modi's Young Authors Mentor Scheme UR 2.0. ये दूसरा वर्जन है। Prime Minister Scheme for Mentoring Young Authors known as UR 2.0, Young Upcoming Versatile Authors. It was launched by Department of Higher Education of the Ministry of Education in October 2. On October 2. In order to promote India and Indian literature abroad, it is an author mentoring program for young and aspiring writers under 30 years old. 30 साल से कम के जो राइटर्स हैं, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको मेंटरिंग दी जाएगी। अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। UR 2.0 aims to artistically and ingeniously emphasize the viewpoint of younger generation of authors on the issue of democracy, institutions, events, people, constitutional ideals, past, present, and future as part of India 75 project Azadi Ka Amrit Mahotsav. The light of last edition's enormous effect, which includes broad participation from young and aspiring authors in 22 more Indian languages in addition to English. UR 2.0 is now being produced. This is all I wanted to discuss with you today, and I am going to conclude this class discussing this only. Okay. So good day to all of you and good night to all of you. See you tomorrow. Thank you, sir. For rest of the content. Excuse me, sir. हाँ बोलो आकाश। सर वो कल डिसीजन मेकिंग क्लास होगी? हाँ बिल्कुल, कल डिसीजन मेकिंग क्लास होगी। जिनको भी Z देना हो प्लीज कम जरूर आओ। ठीक है। ओके, गुड डे, गुड नाइट। थैंक यू।